Yep. 1 सेकेंड। स्क्रीन विजिबल है क्या? कोई कंफर्म कर दो। Yes, yes. Yes, bro, it is. ओके। सो इसमें इन्होंने टैब्स दे रखे हैं for different functions that we've used in class. One is for spilled arrays, then for the operator that Sir taught, hash operator, which spills over the functions. Then there is a sequence ka function just explained simply through 3 steps. Then there is a sequence table format. वो sequence के अंदर ही आता है. It's the same formula. It just creates a table of numbers. Then we have loan amortization. This, I think, sir had not covered, but I'll cover that. It's fairly simple, straightforward, because this is in the practice question, so I'm assuming it might come in the exam. Then we have filtering formulas, sort, filter, unique from a base data where we can sort the data according to our requirements. उसके बाद we have choose calls. Then we have XLOOKUP. And I'll also include pivot tables because इसमें outright नहीं mention करा हुआ है कोई अलग से tab, but we can create pivot tables जो भी data दिए हैं उसमें से. तो starting with this, spilled arrays वाले tab में एक बार सब जाना. Go to cell F6. इसमें ऑलरेडी फॉर्मूलाज इनपुट करे हुए हैं, सो आई थिंक अगर फॉर्मूला डिलीट कर दो यहाँ से देन वील बी एबल टू प्रैक्टिस बेटर, वरना फॉर्मूला देख के तो नहीं प्रैक्टिस होगा. आई मीन, तो over here we have total salaries in column E, and we have the breakdown of salary basically in the components की basic salary कितना है, special allowance, other allowance, उसके percentages दिए हुए हैं. Now if we want to calculate each component for each person, we can simply do that by multiplying salary with the percentage which is given over here. पर उससे खाली एक सेल का डेटा आएगा एंड हमें उससे ड्रैग करना होगा. बट माइक्रोसॉफ्ट 365 में एक उन्होंने बताया था नया फॉर्मूला है जिसमें वी कैन जस्ट सिलेक्ट द होल एरे, बिकॉज हमें सबके लिए पॉपुलेट करना है. सो वील जस्ट सिलेक्ट द टोटल सैलरी वाला कॉलम multiplied by the component percentages, and this should populate the entire table. यहाँ तक clear है? This is very straightforward, I think, to everyone. Hello. हाँ वेदांत, क्लियर है, समझ में आया. Okay. So then the hash operator. So now hash operator में दो rules होते हैं. It basically क्या करता है कि एक सेल से सिलेक्ट करके पूरा स्पिल कर देता है नीचे वैल्यूज. यू डोंट हैव टू सिलेक्ट द होल एरे. यू कैन जस्ट यूज द हैश ऑपरेटर. उसके नीचे जितने भी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज होंगे वो उसे पिक कर लेता है. इट्स अ डायनामिक ऑपरेटर. इट जस्ट हेल्प्स यू टू टाइप इन फॉर्मूलाज इजियर. पर उसमें दो रूल्स होते हैं. एक की हैश ऑपरेटर यूज करने के लिए द स्टार्टिंग सेल मस्ट हैव अ फॉर्मूला एंड द फॉर्मूला मस्ट रिजल्ट इन स्पेलिंग. सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें निकालना था द सम फॉर द क्वांटिटीज. बट इफ वी इनपुट यहाँ पे सेल नंबर C6 में, इफ यू कैन सी यहाँ पे इनपुट करा हुआ है सम C2 हैश, बट दिस इज नॉट प्रोड्यूसिंग एनी वैल्यू बिकॉज ये सारे हार्ड कोडेड नंबर्स है. देयर इज नो फॉर्मूला इन दिस एंड देयर इज नो स्पेलिंग ऑल्सो इन्वॉल्व. तो इस केस में ये यूज नहीं हो सकता है. दैट इज वाई वी आर गेटिंग अ रेफरेंस एरर. इफ वी मूव ऑन टू द अदर सेल विच इज D6, इसमें रेवेन्यू का हमें सम निकालना है. रेवेन्यू सिंपली इसमें दिया हुआ है प्राइस इनटू क्वांटिटी, एंड दिस फॉर्मूला इज ड्रैग डाउन टू द रेस्ट ऑफ द टैब्स.
तो इसमें जब हम सम D2 हैश करते हैं, अगेन इट इज नॉट पिकिंग अप ऑल द वैल्यूज इन द एरे, बिकॉज यहाँ पे अब इस सेल में फॉर्मूला तो है, पर द फॉर्मूला इज नॉट रिजल्टिंग इन स्पिलिंग। तो वो क्या कर रहा है, खाली फर्स्ट वाले सेल को सिलेक्ट कर ले रहा है। तो इस केस में भी ये ऑपरेटर नहीं यूज हो सकता है। नाउ दिस इज द केस वेर वी कैन यूज द ऑपरेटर। यहाँ पे लाइक वी डिड इन द फर्स्ट स्टेप, कि हम एक साथ पूरा एरे सिलेक्ट कर रहे ऑफ प्राइस, मल्टीप्लाइंग इट विद द एरे ऑफ क्वांटिटी, तो वो ऑटोमेटिकली फिल इन कर दे रहा है वैल्यूज नीचे। अब इसमें इफ यू नोटिस, हर सेल में फॉर्मूला हमें ड्रैग नहीं करना पड़ रहा है, ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जा रहे हैं। सो नाउ बोथ कंडीशंस हैव बीन फुलफिल्ड, कि फर्स्ट सेल में फॉर्मूला भी है एंड इट इज रिजल्टिंग इन अ स्पिलिंग ऑफ फॉर्मूला, स्पिलिंग ऑफ वैल्यूज। तो हम लोग हैश ऑपरेटर सिंपली यूज कर सकते हैं। सम ऑफ F2 हैश, बेसिकली F2 से नीचे जितने भी वैल्यूज है वो सारे उसका सम हो जाएगा। सो दिस इज वेयर हैश ऑपरेटर इज यूज्ड। आई थिंक ये क्लियर है, तो आगे बढ़े। वेदांत, एक डाउट है, बाकी कॉलेज में क्यों हाँ, नहीं लगा पा रहे हैं हम हैश? सॉरी, आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा था एक डाउट है कि बाकी कॉलेज में स्पेल क्यों नहीं हो रहा जब हम हैश लगा रहे हैं। सो इस फॉर्मूला में हम लोग बेसिकली क्या करें, फॉर एग्जांपल रेवेन्यू का ओल्ड वाला देखते हैं। व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर सिंपली मल्टीप्लाइंग वन प्राइस विद द क्वांटिटी। तो इसमें खाली प्रोडक्ट ए के प्राइस और क्वांटिटी को कंसिडर करके जो रेवेन्यू है वो हमें मिल रहा है इस सेल में, एंड वी आर सिंपली कॉपिंग दिस फॉर्मूला फॉर ऑल द अदर प्रोडक्ट्स। दिस इज द ट्रेडिशनल वे ऑफ पॉपुलेटिंग अ टेबल। ये एक सेल में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, एंड बिकॉज दिस फॉर्मूला अप्लाइज टू ऑल अदर सेल्स, तो हमने खाली सिंपली कॉपी कर दिया फॉर्मूला। दैट इज वाई इट इज नॉट रिजल्टिंग इन एनी स्पेलिंग। बट अच्छा। ये नए वाले में अगर हम लोग देखें, वी आर सिलेक्टिंग प्राइस ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स मल्टीप्लाइड बाय प्राइस ऑफ ऑल क्वांटिटीज। तो वो हमें एक साथ सारे प्रोडक्ट्स के रेवेन्यूज दे दे रहा है। तो इट इज स्पिलिंग द वैल्यूज नीचे। अगर मैं इस फॉर्मूला को हटाकर दिखाऊं, तो व्हाट इट इज डूइंग इज, मैंने ये सिलेक्ट करा, इसको मल्टीप्लाई किया क्वांटिटी से, तो नीचे ऑटोमेटिकली वैल्यूज पॉपुलेट हो गए, बिकॉज आई हैव सिलेक्टेड द होल एरे। ठीक है, गॉट इट। आई होप दिस क्लियर नाउ। यस। So Vedant, basically you're saying that we have to select entire arrays for hash operator to work. If we करेक्ट, use a formula which is only with between two cells, then it won't work because it wouldn't know which cell to multiply with which one, right? राइट राइट, एंड Okay. इट इज नॉट जस्ट ट्रू इन दिस केस। और भी फॉर्मूलाज होते हैं एक्सेल में जो स्पिल करते हैं वैल्यूज। वील सी दैट इन मूविंग फॉरवर्ड। जैसे सीक्वेंस वाला फॉर्मूला भी जो होता है, दैट ऑल्सो डज अ स्पिलिंग। उस केस में भी हम लोग हैश ऑपरेटर यूज कर सकते हैं इफ एंड व्हेन रिक्वायर्ड। This is just an example to show you the difference between three cases where hash operator did not work in the first two cases and third case में काम कर रहा है because of the conditions. Okay, so moving on, sequence. नाउ सीक्वेंस इज बेसिकली, अगर हम लोग को फॉर एग्जांपल कोई, जैसे लोन अमोर्टाइजेशन का ही एग्जांपल ले लेते हैं। हमें पता है कि हमारे टोटल 120 पेमेंट्स है। फॉर एग्जांपल हम 10 साल के लिए पे कर रहे हैं, हर महीने पे कर रहे हैं, तो 120 पेमेंट्स है। अब हम लोग को अगर एक टेबल बनाना है, वी वांट इनपुट ईच एंड एवरी नंबर, 1 2 3 ऐसे करके, इट विल बी वेरी tedious, मतलब it will waste time. So there's a simple formula which is sequence. So you simply type in sequence. अब यहाँ पे एक्सेल हमें ऑलरेडी दे देता है कि क्या क्या इनपुट वैल्यूज हमें चाहिए। नाउ लेट्स से वी वांट 120, लाइक आई सेड, नंबर ऑफ रोज, बिकॉज उतने नंबर ऑफ पेमेंट्स हमें करने हैं। तो आई इनपुट 120, हमें कॉलम एक ही चाहिए, सो दिस नंबर इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी इनपुटेड,
We can input if we want 1, or we can just let it remain empty. Let's start with this example where we just simply want 120 numbers, and this spills over all the numbers. And now, for example, जो हमने hash operator में पहले करा था, now this applies, hash operator हम लोग इसमें भी apply कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी हमारा formula है and it is spilling the values. So let's say ऐसे randomly अगर हमें sum निकालना है ये सबका, तो we just select this cell, put a hash, ये automatically पूरे array को select करके हमें sum दे देगा of all the numbers. Okay, so next is sequence of first 10 positive odd numbers. अब हमें निकालने हैं पहले 10 पॉजिटिव ऑड नंबर्स, तो हमें 1, 3, 5, 7 ऐसे निकालने हैं, अलग अलग स्टेप्स के साथ निकालने हैं बेसिकली. So what we can do is we can use the different arguments which are given over here. Firstly, rows. हमें 10 नंबर चाहिए, तो 10 होगा रो का वैल्यू, because we want only 10 first 10 positive odd numbers. So the number of rows we want is 10. 10 डाल दिया हमने. अब कॉलम्स, ये हम लोग एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं आर्ग्यूमेंट, बिकॉज इन एक्सेल इट इज अ रूल ऑफ थंब कि यहाँ पे जितने भी आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए हैं उसमें सिंटैक्स के अंदर जिसमें भी ब्रैकेट्स है आर ऑप्शनल arguments. Even if we don't fill in these arguments, Excel will give us an input. और ये सारे जो है जो विदाउट ब्रैकेट है, these are required. वो जब तक नहीं डालोगे तब तक फॉर्मूला सेंस नहीं बनाएगा एंड एक्सेल कोई आउटपुट नहीं देगा हमें. सो कॉलम्स हमें क्योंकि 1 चाहिए तो हम 1 लिख देते हैं. नाउ स्टार्ट, वी वांट कि कहाँ से शुरू करना है वो हम लोग इधर स्पेसिफाई कर सकते हैं. In this case, we are starting with 1 because we want the first 10 positive odd numbers. So start में हम डाल देंगे 1. Now step. Step is the difference between each number. तो हम लोगों को because odd numbers चाहिए और दोनों के बीच में 2 का difference है. So like 1 और 3 के बीच में 2 का difference है. That is the step we are considering. So we'll put 2 over here. And we'll get first 10 positive odd numbers. Then next, back counting sequence of numbers. 1 second. Yeah. Back counting sequence of numbers basically अगर हमें ये हमने कर लिया ascending order में, अगर हमें descending order में चाहिए, for example हमें चाहिए कि जो हमारे 120 पेमेंट्स हमने इधर कंसिडर किए थे, हम उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना चाहते हैं कि हमारा लास्ट में कितना पेमेंट होगा एंड कंटिन्यूइंग टू फर्स्ट पेमेंट हमारा कितना था. दिस इज जस्ट एन आर्बिट्ररी एग्जांपल. तो इस केस में हम लोग सीक्वेंस डालेंगे. अब हमें नंबर ऑफ रोज उतना ही चाहिए, 120 चाहिए. कॉलम्स भी वी हैव 1 कॉलम. नाउ स्टार्ट में we'll simply put 120 because this will be our first number. एंड स्टेप में हमारा हो जाएगा -1 क्योंकि फिर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें दे देगा. सो इन दिस वे वी कैन गेट अ डिसेंडिंग लिस्ट ऑफ फर्स्ट 120 numbers. Sequence clear है guys? Yes. Okay, so next we have sequence tabular data. Now over here इसमें दिया हुआ है we want a sequence of 90 numbers from 1 to 90 in 9 rows and 10 columns. So अभी तक हम लोग खाली rows में input कर रहे थे कि how many rows we want. Now when we input the number of columns that we want, it will automatically calculate the like how many numbers you want. So for example, if you have 9 rows and 10 columns, you'll get 90 numbers. If you have 10 rows and 20 columns, you'll get 200 numbers. So हमने करा 9 rows में and 10 columns में.
So this will simply give you 1 2 3 4 ऐसे फर्स्ट रो को वो पॉपुलेट करेगा पहले 10 नंबर से, बिकॉज फर्स्ट आर्ग्यूमेंट रो है, तो इट विल पॉपुलेट रो वाइज 1 2 3 4 से लेके 10 तक, देन सेकेंड रो में 11 से 20 तक, एंड कैरिंग ऑन ऑल द वे टू 90. एंड लेट्स से हमें इसका ट्रांसपोज चाहिए, बिकॉज एक्सेल खाली रो वाइज पॉपुलेट करता है, बट वी वांट कि कॉलम वाइज करे, कि इस फॉर्मेट में करे जो इस टेबल में दिया हुआ है. then we can simply use the transpose formula. Transpose means the basically opposite of the table. We'll just put transpose and select this. अब यहाँ पे हम hash operator easily use कर सकते हैं to select the entire array, because इस cell में formula है and it spills over the values. तो हम लोग जब ये करेंगे ये पूरे array को select कर लेगा and उसका transpose हमें दिखेगा. Clear guys? Vedant, so to use transpose, we first have to always use sequence, right? Right. We can also do that simply in one formula कि हमने transpose लिखा and instead of selecting the array, we type in the sequence formula. अब क्या हो रहा है इसमें, Excel will first build an array of this sequence, which is 9 rows and 10 columns. And then considering this array, it will reverse the order and create a transpose table. तो हमें directly ये output मिल जाएगा. This can be done with any type of function in Excel. You can include different types of functions within other functions based on what you want to analyze or calculate. So that can be done very intuitively, because Excel जब भी कोई formula तुम enter करते हो, it clearly gives you the syntaxes कि उसमें क्या input करने हैं, and it's like very intuitive कि तुम्हें क्या चाहिए उसके accordingly तुम डाल के देख लो. यार वेदांत, आई हैड वन मोर क्वेश्चन. सो यहाँ पे जब तूने ट्रांसपोज का फॉर्मूला डाला था, तो डिड यू टाइप इन B5 हैशटैग? I mean, you selected B5 and then hashtag you typed it in, right? Yeah. Hashtag I typed in. ठीक है. B5 मैंने select करके बस hashtag टाइप करा. Right. Okay, then moving on to loan amortization. This is something which sir hasn't taught us. So do you want me to cover it right now कि मैं पहले जो सर ने कराया है वो कवर करके फिर लोन amortization पे आऊँ? जो सर ने कराया वो कर लेते हैं. Hello. हाँ वेदांत, जो सर ने कराया पहले वो कर लेते हैं, आई थिंक. All right. I'll move this to the end then. ठीक है. So sequence के बाद filter, unique and sort. This is basically अगर हम लोग को कोई base data दिया हुआ है, for example ये है हमारा base data where we have names, departments, ratings, salary, etc. और हमें उसे sort करना है department wise, या for example rating wise, या for example हमें salary के हिसाब से sort करना है. तो इस data को हम लोग manually अगर करने जाएंगे it will take a lot of time. We can simply use different functions like sort, unique to do that for us. Just to give you an introduction to the formulas, यहाँ पे जैसे दिया हुआ है हमें unique list of departments निकालना है. So we can use the formula unique and select the array. अब हमें department का चाहिए तो हम department वाले array को select कर लेंगे, and this will give us all the unique values from the department column, because there are multiple entries of the same department की admin में 10 लोग हैं, marketing में let's say 50 लोग हैं, तो उस हिसाब से हमें अगर निकालना है कि total number of departments कितने और क्या क्या है, वो इससे निकल जाएगा unique से. Now rating, अगर हमें निकालना है कि कितने types of ratings है, because यहाँ पे base data को देखकर हमें ऊपर से तो दिख रहा है 1 2 3 4 5 सारे रेटिंग्स है, बट हो सकता है 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, हमें नहीं पता. हमें अगर निकालना है तो वी कैन डू दैट बाय यूनिक
selecting the array, and we get these values. Now, this is not arranged in any particular order. This is basically arranged in the order of the entry कि 5 पहले है तो इसने 5 दे दिया पहले यूनिक में, उसके बाद 2 है स्टेबल में तो 2 दे दिया, 3 है एंड सो फोर्थ. पर अगर हमें चाहिए कि हमें इसे कोई ऑर्डर करना है, लेट्स से असेंडिंग करना है या डिसेंडिंग करना है, so we can use the sort formula. We'll simply put in sort. Now what do we want to sort? We want to sort the unique entries of the ratings. तो array में हम लोग unique and we'll select the array. So Excel को हम basically बता रहे कि हमें क्या sort करना है. Now sort index. Sort index is basically कि तुम कौन सा कॉलम सॉर्ट कर रहे हो. लाइक अभी ये वाला आर्ग्यूमेंट एक बार इग्नोर करते हैं टू लाइक अवॉइड कंफ्यूजन, क्योंकि बाद में मैं थोड़ा बताऊंगा, इट विल मेक मोर सेंस. हम जो दूसरे डेटा में यूज करेंगे उसको. तो एक बार के लिए सॉर्ट इंडेक्स को एम्प्टी रख दो, जस्ट पुट अनदर कॉमा ओवर हियर. नाउ इट्स आस्किंग फॉर असेंडिंग और डिसेंडिंग. सो 1 represents ascending, -1 represents descending. You can simply select whatever you want. Let's say ascending चाहिए हमें, 1 डाल दिया हमने, तो ये हमें यूनिक रेटिंग्स दे देगा सॉर्टेड असेंडिंग ऑर्डर में. अब इधर अगर आते हैं, सो दिस इज द बेस डेटा दैट वी हैव एंड दिस इज द सॉर्टेड डेटा दैट वी हैव. यहाँ पे दो चीजें लिखी हैं कि वी नीड टू सॉर्ट बाय डिपार्टमेंट A to Z and then by salary, which is descending. So now what we'll do is we'll do sort. We'll select the entire array of data that we have over here. Now sort index. अब sort index क्या करता है? इसमें तुम बेसिकली दिखा रहे हो कि कौन से कॉलम को तुम्हें किस ऑर्डर में डालना है. Now we want to sort by department A to Z. बेसिकली हमारा सेकंड कॉलम में डिपार्टमेंट के वैल्यूज है. सो सेकंड कॉलम को हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है A से Z एंड सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर. सैलरी इज फोर्थ कॉलम, तो फोर्थ कॉलम को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है. दैट इज व्हाट वील इनपुट इन द एक्सेल. तो सॉर्ट इंडेक्स में वील यूज द कर्ली ब्रैकेट्स. First we'll input the columns that we need to sort, which is our department, column number 2, and salary, which is column number 4. ये हमारा आ गया कि हमें कौन से कॉलम्स के हिसाब से सॉर्ट करना है. The next entry is sort order, like we saw कि ascending और descending. अब again we'll use curly bracket. Second वाला जो कॉलम है which is department, वो हमें ascending चाहिए. So we'll put 1 corresponding to the location जो भी है. उसके बाद हमें सैलरी चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो we'll just put -1 curly bracket and then close the entire formula. एंड यहाँ पे हमें हमारा आउटपुट मिल गया. जैसे पहले एडमिन है, फाइनेंस है, HR है. दिस इज ऑर्डरिंग इट इन द A to Z format, and within those departments, if you see, the salaries have been ordered in descending order. तो इसने एक फॉर्मूला से पूरे डेटा को 2 पैरामीटर्स के बेसिस पे सॉर्ट कर दिया. Any questions over here, or should I move on? Vedant, could we have used two different formulas instead of using the curly brackets if we would have written sort under department and then sort under salary? Would that have also worked? Actually क्या करता है ना, ये sort is a spilling function, like we saw over here also. यहाँ पे sort हमने डाला तो जो भी values हम select करें जिस भी array से, वो सारे values को fill कर दे रहा है नीचे जितने भी उसके empty cells है उसके अंदर. तो अगर हम इसमें एक सिंगल सॉर्ट यूज करते हैं तो वो खाली जिस भी पैरामीटर को आप पहले डाल रहे हो
उसके हिसाब से ही सॉर्ट करके ये ऑटोमेटिकली फिल कर देगा सारे वैल्यूज. सो इन दिस केस वी कैन नॉट यूज टू सॉर्ट फॉर्मूलाज, क्योंकि हमें एक साथ इसे देना है कि हमें कौन से पैरामीटर्स के हिसाब से सॉर्ट करना है. अगर हम खाली डिपार्टमेंट का देंगे तो वो खाली डिपार्टमेंट के हिसाब से सॉर्ट करेगा, खाली सैलरी का देंगे तो खाली सैलरी के हिसाब से सॉर्ट करेगा. What we can do over here is we create a table where we first sort it according to the department, and then we create another table उसके बगल में which is sorted according to the salary, referencing this particular table which is sorted by department. तो वो एक्स्ट्रा मेहनत है, बेसिकली 2 टेबल्स बनाने होंगे हमें. अगर हमें 3 पैरामीटर के हिसाब से सॉर्ट करना है तो 3 टेबल्स बनाने होंगे. इसमें एक साथ कंडेंस हो जाता है सब. Got it. Yeah, one more slightly silly question. Why are we using curly brackets here? वो एक्सेल का बेसिक फॉर्मेट है कि जो इसमें इनपुट करना है, बिकॉज द फर्स्ट ब्रैकेट इज यूज्ड टू represent the opening of a formula and closing of a formula, and this is used to represent a set. Basically this is a set. ठीक है. That is why. Yeah. Moving on. So now if we want to fetch data of employees based on the above inputs sorted in descending order of total salary. Basically above inputs क्या हो गया, selected department rating. हमें अगर निकालना है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में नंबर 1 रेटिंग पे जितने भी लोग हैं वो लोग का डेटा निकालना है कि नेम, डिपार्टमेंट रेटिंग तो हमें पता ही है, फाइनेंस एंड रेटिंग 1, और उनके रिस्पेक्टिव सैलरीज क्या है. तो हाउ कैन वी डू दैट? इसमें बेसिकली हम लोग यूज करेंगे सॉर्ट. नाउ वी हैव टू सॉर्ट द फर्स्ट 4 कॉलम्स, बिकॉज हमें पूरे डेटा का नहीं चाहिए, हमें खाली चाहिए नेम, डिपार्टमेंट, रेटिंग एंड टोटल सैलरी. सो वील सिलेक्ट दिस एरे. नाउ सॉर्ट इंडेक्स. अब सॉर्ट इंडेक्स में हमें फाइनेंस के बेसिस पे भी चाहिए एंड रेटिंग के बेसिस पे भी चाहिए. सो व्हाट वील डू इज वील फर्स्ट सिलेक्ट, एक ब्रैकेट खोल के हम सिलेक्ट करेंगे डिपार्टमेंट वाले कॉलम को. नाउ आवर कंडीशन इज दैट दिस पर्टिकुलर कॉलम should equal to finance, and along with this we'll use star. Star is basically कि हम लोग 2 कंडीशंस को एक साथ क्लब इन कर रहे हैं. तो हमें फर्स्ट कंडीशन हमने डाल दिया. अब सेकंड कंडीशन यानी कि विच कॉलम वी वांट टू सॉर्ट इट बाय, which is rating. Now this rating should be equal to 1. This is basically the input की हम लोग कौन से कॉलम्स किस डिपार्टमेंट और रेटिंग के लिए कर रहे हैं. एंड नाउ वी कैन पुट असेंडिंग डिसेंडिंग जो भी ऑर्डर चाहिए, बिकॉज ओवर हियर इट्स रिटन डिसेंडिंग, we'll use -1. One second. I think you missed the brackets or something. No, sorry. I think we have to put it in curly brackets, right? Is it like that or? No. I think filter function. Okay, I forgot using the filter function altogether because we are filtering out the data, no? My bad. I'll input it once again. So sort. Now, जो हमें array चाहिए, which is the first 4 columns, हमें इसे पहले sort करना होगा. And then we can put in which column we want to sort by. So we'll use filter inside this. हमें ये चारों को filter करना है. Now we have to include the department which is finance. ये जैसे अगर इधर देखो syntax में array and include लिखा है filter में, तो we'll select the department and it should be equal to finance.
वन सेकेंड, यहाँ पे क्योंकि दो कंडीशन है तो यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन हो जाएंगे. दिस इज आवर फर्स्ट कंडीशन clubbed with the second condition, which is the rating should be equal to 1. So what it is doing is it is first filtering out the data जिसमें जो भी एंट्रीज है जो फाइनेंस के डिपार्टमेंट से है एंड जिनका रेटिंग 1 है, पहले ये फिल्टर कर रहा है एंड दैट इज आवर एंटायर एरे. अब उसमें हमें सॉर्ट इंडेक्स डालना है. We are sorting it on the basis of salary. So the salary is the fourth column. We'll input 4 and by descending order, so -1. Any doubts over here? ये थोड़ा सा Why have you written 4? Sorry, I missed that. sorry, क्या चीज? Why have you written 4? ये सॉर्ट इंडेक्स है. सॉर्ट इंडेक्स इज बेसिकली कि हमें किस कॉलम के बेसिस पे सॉर्ट करना है. So because we are sorting it on the basis of the salary column and it is the fourth column in our array, तो we are putting in 4. क्योंकि अगर हम लोग इसमें कोई नंबर इनपुट नहीं करते हैं तो एक्सेल को नहीं पता होगा कि इन चारों कॉलम्स में से किस कॉलम के हिसाब से असेंडिंग या डिसेंडिंग करना है. वी हैव टू Got it. Thank स्पेसिफाई you. दैट. Mhm. And also, why did you use the multiplication sign वहाँ पे बीच में? I didn't get that part. सो मल्टीप्लिकेशन इसलिए क्योंकि हम लोग दो कंडीशंस को एक साथ अप्लाई कर रहे हैं. जब हम लोग फिल्टर यूज कर रहे हैं Okay. उसमें we are selecting the array that we want to filter out, and based on two conditions we are filtering it. First condition being finance department, second condition being rating number 1. Okay. Yeah. Any other questions in this formula, guys? Okay. I think I'll move on to the next part of it. Just I guess we did not cover the form control box. control box ना. हाँ, so over here इसमें इस डेटा में नहीं दिया हुआ है कोई कंट्रोल बॉक्स क्रिएट करने का. But what I'll do is, if you want to know about that, I'll use the sheet that sir had used in class and tell you how to do that. वेदांत उसके अभी पहले वाले में क्योंकि था ना तो एक बार उस पे जा हाँ क्या? देख ये ऑप्शन जो सिलेक्ट डिपार्टमेंट और रेटिंग है. ओके ओके राइट, द डेटा वैलिडेशन पार्ट ना, ये जो हाँ, हम लोग इसका एक इधर बता ड्रॉप देना एक बॉक्स बार. क्रिएट कर रहे हैं. राइट राइट, आई विल शो दैट वन सेकंड. सॉरी. सो यहाँ पे इफ यू सी एक ड्रॉप बॉक्स क्रिएट किया हुआ है वेयर वी कैन सिलेक्ट द डिपार्टमेंट्स, एंड सिमिलरली रेटिंग के लिए भी एक ड्रॉप बॉक्स बना हुआ है वेयर वी कैन सिलेक्ट. तो हाउ डू वी डू दैट वो दिखाता हूँ मैं. एक बार यहाँ पे नहीं इनपुट करो बिकॉज दिस कांट बी deleted once you've created a Dropbox. I'll create it over here. One second. Yeah. So इसमें we'll simply go to data. Data के अंदर ये वाला जो टैब है, this is for data validation over here. Once you click on data validation, now settings में you can select what kind of Dropbox you want. Oh, in this case we want a list कि अलग अलग वैल्यूज के हिसाब से हम वैलिडेट कर सकते हैं अपने डेटा को. हमें लिस्ट के हिसाब से चाहिए. वी सिलेक्ट लिस्ट. ये डिफॉल्ट रहने देना. नाउ आवर सोर्स विल बी ये एरे बिकॉज डिपार्टमेंट हम लोग डिपार्टमेंट का ड्रॉप बॉक्स बना रहे बेसिकली. सो वील सिलेक्ट दिस एंटायर एरे and click on OK. So now what it does is it creates a drop down option for all the different departments. Similarly for rating, we go on data tab
go to data validation, select on list, then source में we select the rating वाला column. So now we have a Dropbox over here for rating. यही चीज यहाँ पर करी हुई है. So let's say finance rating 1 जो हमने पहले निकाला था. अब अगर हमें फाइनेंस में ही रेटिंग 2 वालों का सैलरी चाहिए तो वो भी आ गया इसमें. इफ यू वांट मार्केटिंग में रेटिंग 2 वालों का क्या है तो ये डेटा भी कवर हो जाता है. So what it does is because we have linked it to these cells which have a Dropbox option, we can simply select the option that we want and accordingly it will populate the data. Bro, how is the box and the drop down thingy coming in the top one? This is the same thing which I've done over here. This is already done यहाँ पे. जो मैंने इधर करा है वही सेम चीज करी हुई है. So for example अगर हम लोग इसमें भी इस फॉर्मूला में हमने लिखा है कि डिपार्टमेंट, ये जो फिल्टर में हमने कंडीशन डाला है कि डिपार्टमेंट वाला एरे बेसिकली दिस शुड इक्वल टू C5. सो इट इज लिंकिंग टू दिस सेल. अगर हम लोग इसकी जगह इससे लिंक करते हैं एंड सिमिलरली रेटिंग वाले को C6 की जगह इससे लिंक करते हैं, सो नाउ इट विल गिव अस डेटा फॉर मार्केटिंग रेटिंग 4 एंड यहाँ से वी कैन चूज वॉट एवर वी वॉन्ट. यहाँ पे इट्स क्लियर. ब्रो वेदांत एक बार कॉम्बो बॉक्स भी बता देगा फटाफट. सो कॉम्बो बॉक्स ठीक है चल बताता हूँ, वो उसके लिए है. आई डोंट नो अगर बाद में कवर होएगा कि नहीं, बट अगर कर Yeah, one सकते हैं अभी second. तो. Yeah, so for example, we've created a table out of this data. ये हमें profits दिए हुए हैं for FY 23, 24 and 25. And we've created a table where we need to so like FY 23 के लिए ये table बना हुआ है. And this is taking out इसमें से values for the first column, ये index function use करके. I'll show that function as well to you guys. What index does is कि हम लोग एक एरे सिलेक्ट करते हैं विच इज हमें इसमें से डेटा निकालना है, एक पर्टिकुलर साल के लिए निकालना है, तो हम खाली ये वाला सिलेक्ट कर लिए एरे. नाउ रो नंबर इसमें रिडंडेंट है क्योंकि हमें पूरे टेबल के लिए चाहिए, सो वील पुट 0. एंड कॉलम नंबर अगर हम लोग 1 डालें, सो व्हाट इट विल डू इज इट विल सिलेक्ट FY 23 का डेटा and it will populate it over here. Now इसको जैसे ही हमने 2 करा, so it will read it and change all the values based on it. FY 24 के select कर ले रहा है ये values. If you put in 3, it'll give us FY 25. 4 डालने से कुछ नहीं आएगा. Simply that. अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो हमने चार्ट बनाया है using this table, this is basically a waterfall chart. This also I'll show you guys how to make. You select your data, go on insert, go on waterfall. It simply creates a chart. This is basically how any chart is made in Excel. Now, combo box का क्या है? If you want, you can create 3 or 4, how many ever years you have, उसके options, and वहाँ पे you can just click on each option and it keeps dynamically changing the output. So you go to the developer tab, you go to insert, and यहाँ पर ये है combo box का option. Sorry, we are not doing combo box.
we are doing option button जो है. So now we've created one button. इसको we can name, control and click on this particular thing that you've created. तब जाके you can edit the text over here. I've selected it as FY 2023. Now, since this is the first option box that I've created, Excel will consider this as number 1. Now, control दबा के इसको click करोगे. If you copy and paste it, rename it to FY24. Now, Excel considers this as option number 2. Similarly, you create one for here. Sorry. Yeah, now this is option number 3. What we can do is, we can, from here, we select FY23, control and press on FY23, it will select the box. And we can do format object. इसमें unchecked select कर लेना, and cell we are linking here. तो इसमें जो भी value होगा उससे link कर देगा वो cell को. So when you input 1, it is this. When you input 2, it is this. And when you input 3, it is this. And यहाँ से भी select कर सकते हैं directly FY23, 24, 25. एक बार दोबारा ये लिंकिंग पार्ट समझाओ ना कि ये लिंक कैसे किया, लिंक सेल को और रेडियो बटन्स को. So यहाँ पे जो हमने बटन क्रिएट कर लिया है, if you want to edit this, पहले control दबा के you have to select this. Once you have selected this, right click on it, you will get a format control option. अब format control में you select the value as unchecked because by default you want it to be unchecked. And cell link जो हम लोग कर रहे हैं, we are linking it to this cell. ओके now it समझ is गया. linked बट to ये this cell. तीनों बटन्स को नहीं करना पड़ता या फिर मतलब एक से ही हो जाता है तीनों को लिंक? हाँ, एक से हो जाता है because Excel already, हाँ, Excel already रीड करता है कि तुमने पहले एक बनाया, फिर दूसरा बनाया, फिर तीसरा बनाया, तो वो ऑर्डर्स असाइन कर देता है उसको. इफ यू क्रिएट अनदर वन, इट विल कंसिडर दैट आल्सो, एंड यहाँ पे इनपुट 4 हो जाएगा. ऑल्दो उससे कोई डेटा नहीं आएगा, बट यू कैन डू दैट. ओके थैंक्स. या कॉम्बो बॉक्स भी कवर कर लेते हैं आई थिंक. सो यहाँ पे बिकॉज एक्स लुकअप फिल्टर ये सब फंक्शंस हमने अभी कवर नहीं करे. फिल्टर तो हमने कर लिया बट एक्स लुकअप नहीं करा है, तो आई विल अवॉइड दैट. I'll just simply show you how you create a combo box. Again, you go to developer tab, you select this option which is combo box, and कहीं भी ऐसे draw कर दो. Now similar to the option control that we did in the other tab, you have to select this, right click and format control. Now इसमें input range हमें select करना है. So our input, for example, we want the data based on the countries. क्योंकि यहाँ पे कंट्रीज दिए हुए हैं, तो हम लोग कंट्रीज वाले एरे को सिलेक्ट कर लेते हैं. And then cell link. So our cell link over here, we've created a placeholder for a cell जो हमने इधर इसको लिंक कर दिया. Okay. So now when the cell link has value 1,
यहाँ पे अफगानिस्तान दिखा रहा है। सिमिलरली अगर यहाँ से हम लोग चेंज करते हैं, हमें जानना है कि आर्मीनिया कौन से नंबर पे है, विच इज 8। देन वी वांट टू नो पाकिस्तान कौन से नंबर पे, 130। So it automatically gives you the rank of where the data is in this particular data set. And because यहाँ पे हमने XLOOKUP use करके values extract करे हैं, so what it does is कि इस सेल से लिंक कर लेता है कि हमें कौन से नंबर वाले रो का डेटा चाहिए, and it populates it over here. So whenever we change the country from here, it keeps changing the output. That is basically the use of a combo box. But all this is not required in a practical setting क्योंकि pivot table से सब कुछ हो जाता है, वो भी मैं एक बार दिखा दूंगा. Combo box clear है, so we, or does anybody have a question? Guys, I guess it's clear भाई, आगे मूव कर सकते हैं. yeah, आगे बढ़ते हैं. 1 second ना, मुझे just give me 2 minutes please. Yeah, I guess. So, moving on to the next function, which is choose calls and X match. So, इसमें we have to fetch the data of the employees with salary greater than 40 lakhs. यहाँ पे we have the base data and हमें basically निकालना है कि इसमें कितने employees का 40 लाख से ज्यादा है salary. Now, what we need to do is यहाँ पे हमने यूज करा है चूज कॉल्स. चूज कॉल्स क्या करता है कि वो सारे कॉलम्स सिलेक्ट करता है विच यू वांट टू फिल्टर आउट ऑफ द डेटा. सो हमने किया चूज कॉल्स. अब इसमें हमें दिखा रहा है कि कौन से एरे से यू वांट टू सिलेक्ट द डेटा. लेट्स से हमने पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लिया एंड नाउ इट्स आस्किंग फॉर द कॉलम नंबर, लेट्स से 1. So it simply gives you column 1 के values, जो है तुम्हारा name. If you put in, let's say 4, it will give you the total salaries. But we want specifically the data for people who have salary greater than 40 lakhs. So for that, what we'll have to do is, हमें उसका name चाहिए, salary चाहिए, department चाहिए. So we don't want a single value. Like एक column का डेटा हमें नहीं चाहिए, हमें मल्टीपल कॉलम्स के डेटा चाहिए. अभी जैसे हमने देखा वो खाली एक कॉलम का डेटा हमें दे रहा था. सो फॉर मल्टीपल कॉलम्स व्हाट वी हैव डन ओवर हियर इज, यहाँ पे हमने एक रो क्रिएट किया है जो कॉरिस्पॉन्ड करता है कि नेम कौन से कॉलम नंबर पे है, सैलरी कौन से कॉलम नंबर पे है, डिपार्टमेंट कौन से कॉलम नंबर पे, बिकॉज देयर कैन बी एन नंबर ऑफ कॉलम्स एंड मैनुअली जाके देखना कि ये 4th है, 8th है, 20th है. उससे बेटर वी कैन यूज द एक्स मैच फंक्शन. सो व्हाट एक्स मैच डज इज, you have to select the lookup value.
Now our lookup value are these values कि हमें नेम जानना है कि कौन से कॉलम में, सैलरी जाननी है कौन से कॉलम में, डिपार्टमेंट जाननी है, तो हमें ये लुकअप करना है बेसिकली. एंड लुकअप कहाँ से करना है? इस एरे से. सो वी कैन सिलेक्ट दिस होल एरे, क्योंकि इसके अकॉर्डिंगली फिर हमें वो रैंक करके दे देगा कि कौन से कॉलम में क्या है. So we have 1, 4, 2. Basically, name is in first column, salary fourth, department 2. Now over here, we want to um, use choose calls to find the data for employees with 40 lakhs and greater salary. अब इस array में we'll have to first filter out that data. So we use filter. We select the entire array. Now filter में include हमें कौन सा करना है? We have to include only those entries जिसका salary is greater than 40. So we select this array and put greater than 40 lakhs. So now we've told Excel कि हमें कौन से array से data निकालना है. Now for the second argument कि choose columns में हमें कौन से columns चाहिए, हमने ऊपर क्योंकि populate कर दिया है कि हमें first, fourth and second column की data चाहिए. We can simply select this array. We can select पूरा ऐसे, या तो we can use the hash operator because it's a spillover formula used above. One second. What did I miss? I think I missed a bracket. Okay, ये ऊपर से select कर रहा है, नीचे होना चाहिए. No. I don't know what have I selected wrong. One second, guys. Okay, वो delete हो गया मेरे से गलती से, sorry. So choose calls. We need to filter the data by selecting the whole array. Salary greater than 40 lakhs and column number from this. So we have the data for all the people having salary greater than 40 lakhs. ये clear है क्या guys? Yes, yes. Oh, Okay, Vedant, can you so explain the third parameter once again? the third parameter, B7 hash. इसमें जो the hash one. The B7 hash part. हाँ, so we basically want to input कि हमें कौन से columns चाहिए. So the column numbers we had populated over here using Xmatch. We can either select this whole array कि हमें इन चारों के लिए इन तीनों parameters के लिए values चाहिए, या तो we can simply use hash. Even if you select the whole thing, it will automatically put in a hash symbol. Okay. So similarly, can we also use that the curly braces and then 1, 1, 4, 2? No, so in this case, we have options of entering multiple column numbers. So if we input 1, 4, 2 separately, even then we'll get the answer. But because over here we've used Xmatch to determine कि कौन सा column number है, because we can have, let's say, 100 columns. अब उसमें we can't
go and see कि कौन से कॉलम में सैलरी का डेटा है या कौन से कॉलम में डिपार्टमेंट का डेटा है. So instead of inputting it manually, we can simply use the X match to see कि कौन से कॉलम में ये सारे डेटा है एंड फिर उस सारे को सिलेक्ट कर लो तो तुम्हें सारे वैल्यूज दे देगा. Got it. Thank you. Yeah. Next, X lookup. So X lookup basically if we want to know, इसमें जैसे एक सेकंड, इसमें जैसे हमने पहले देखा था वो ड्रॉप बॉक्स वाला ऑप्शन, we've done the same thing over here. डेटा में जाके डेटा वैलिडेशन के थ्रू we've created a list. So now we want to know कि इस employee ID, because we have multiple employee IDs over here, we want to know कि किस employee ID में किसका नाम मैप किया हुआ है. So like you can see, I'm selecting different employee IDs and it is automatically telling me कि क्या नाम है उस employee का जिसका ID ये है. How did we do that? We've done X lookup. So what X lookup does is basically you have to specify a lookup value कि what you are trying to look up in the array. हमें employee ID के basis पे देखना है तो हम employee ID को lookup value में डाल देते हैं. Then our lookup array is basically our base data जो हमने select कर लिया. Now return array. यहाँ पे we have to specify कि what value we want to extract out of the data. In this case, we want name. So we'll select name wala column. So what it does is basically in the first argument, we've told it कि for employee ID in L5, out of the base data in the entire array, we want the names, which is in this column. Why is it giving it an error? Okay, I missed one argument. That is why it's giving an error, which is if not found. So if not found, then we have to give a message कि अगर हमें डेटा नहीं मिला, let's say यहाँ पे कोई employee ID लिखा है जिसके नाम पे कोई मैप ही नहीं करा हुआ है, so we'll simply put in not found. What is it? One second, I'll just do it once again. So we have to look up this value, look up array. Okay, sorry, my bad. I had selected the entire array, but we are looking this up only for employee ID. That is why it's called lookup array. It's not the entire array that we are selecting. Lookup value, what we want to look up. Lookup array, where we want to look it up from, which is this column. And return array, कि हमें result क्या चाहिए, which is name. And then we can put an additional argument of if we find an employee ID जहाँ पे कोई मैप ही नहीं करा हुआ है, for example हमारे डेटा में कोई मिसिंग है, so we can put it as not found. Vedant, so lookup value has to be the drop down option, right? या सो इस केस में हमने ड्रॉप डाउन ऑप्शन क्रिएट किया है इसलिए है, बट अगर लेट्स से हम रैंडम कोई वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे एंड वी लिंक इट टू दिस, सो तो सिंस दिस not नंबर found माइट आएगा, नॉट ठीक है. बी, तो नॉट फाउंड आ रहा है. या बिकॉज इस ड्रॉप बॉक्स में तो खाली वही वैल्यूज है जो ऑलरेडी प्रेजेंट है इस एम्प्लॉय आईडी वाले आरे में, तो हमेशा जो भी हम लोग सिलेक्ट करेंगे कोई ना कोई आउटपुट आएगा ही इसका क्योंकि मैप करा हुआ है, बट कोई रैंडम नंबर अगर इसमें डला हुआ होता तो नॉट फाउंड दिखाएगा. ठीक है, got it. Now I can show you the pivot table. इस डेटा में तो let me see. इस डेटा से better I think, yeah. So pivot table में
लेट्स से हमें ये सारा डेटा दिया हुआ है, it simply makes a table out of it where we can drop like pick and drop options जिस accordingly हमें चाहिए कि हमें let's say salary जानना है for marketing department and हमें खाली department wise उसे sort करना है. We can simply create a pivot table out of it and drop down मतलब pick and drop our options. I'll show you, you'll understand better. You select the whole table, go to insert and select pivot table and select OK. ये new worksheet में एक pivot table इसने create कर दिया. Now this is a space for a pivot table where you can drag and drop the options whatever you want. Let's say हमें rows में चाहिए names. तो इस ये row wise सारे names को populate कर देता है over here. Now let's say for each name we want the total salary. तो columns में चाहिए हमें salary. सॉरी रोज में चाहिए हमें सैलरी. तो हर नेम के नीचे उसकी सैलरीज इसने मैप कर दी है. लेट्स से हम इसे वैल्यूज में डालते हैं. सो व्हाट इट विल डू इज फॉर ईच नेम इट विल शो मी द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द पैरामीटर वीव चोजन. इन दिस केस इट इज टोटल सैलरी. लेट्स से टोटल सैलरी के साथ हमें डेट ऑफ बर्थ भी देखना है. वील पुट इट इन वैल्यूज. Now, what it is doing is, it is showing me the count of date of birth, which means कि जितने बार date of birth enter करा गया है, which is simply 1. तो क्योंकि एबी बून का एक ही बर्थडे हो सकता है तो एक बार दिखा रहा है इसमें. इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं if we want to know the let's say average या फिर sum या फिर max min product. We can select from here. इस केस में इसको एक बेटर वे में ऑर्गेनाइज करते हैं. लेट्स से हमें डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरीज जाननी है. सो हमने डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर लिया, टोटल सैलरी को वैल्यूज में डाला. सो नाउ व्हाट इट इज डूइंग इज इट इज शोइंग मी कि एडमिन का टोटल सम ऑफ सैलरीज कितना है, कि हम लोग एडमिन में जितने भी एम्प्लॉयज है उसको कितनी सैलरी दे रहे हैं, और सिमिलरली फॉर अदर डिपार्टमेंट्स. बट इफ यू वांट टू नो व्हाट इज द एवरेज ऑफ what is the average salary of all the employees in these departments. So what we can do is click on this arrow over here, go to value field settings, and यहाँ पे हम लोग average select कर सकते हैं. So now what it is giving me is the average salary of each department. हम लोग अपने हिसाब से इसको sort कर सकते हैं. We can put in let's say basic salary. By default it is showing me the sum of basic salary. Again we can do an average or a count or a minimum maximum whatever. Let's say हमें minimum basic salary जाननी है, we'll select minimum. So these are the minimum basic salaries for each department. अब हमें अगर filter लगाना है कि हमें खाली rating 1 वाले लोगों का डेटा चाहिए. So we'll select this, drag it over here. Now it has created a filter option जिसमें by default सारे select करे हुए हैं. We can select let's say all के जगह select multiple items में हम लोग जाते हैं. अब इसमें हम select कर सकते हैं let's say top 3 rating वालों का हमें चाहिए. So we deselect 4 and 5. So number 1, 2 और 3 का हमें चाहिए कि average salary and minimum salaries क्या है. So now the numbers change accordingly. So this is a dynamic environment that Excel creates जिसमें you can basically do anything, play around. अब इसी में स्लाइसर का ऑप्शन आता है. You simply go over here and select insert slicer. Now what slicer does is जो हम लोग यहाँ पे फिल्टर क्रिएट कर रहे हैं उसी फिल्टर को वो यहाँ एक साइड बार में क्रिएट कर देता है where we can choose according to our needs. जैसे रेटिंग का ही अगर हम लोग स्लाइसर डालते हैं
तो बिकॉज फिल्टर में हमने 1 2 3 सिलेक्ट करा था, स्लाइसर में भी वही दिखा रहा है। नाउ वी कैन सिंपली डू कि रेटिंग 2 का हमें चाहिए। कंट्रोल दबा के यू कैन सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स, 2 और 3 का चाहिए, 1 2 और 3 का चाहिए, 1 2 3 4 5। तो उस अकॉर्डिंगली ये स्लाइसर अप्लाई होते रहता है टू द पिवट टेबल प्रेजेंट ओवर हियर। इसमें हम लोग एक और स्लाइसर भी ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल स्लाइसर्स। लेट्स से वी ऐड अनदर स्लाइसर, लेट्स से बेस्ड ऑन डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ तो बहुत सारे सबके इंडिविजुअल हो जाएंगे। लेट्स से डिपार्टमेंट रोल, बट क्योंकि हमने रो लेबल्स में डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर रखा है तो ये सारा बाय डिफॉल्ट दिखा रहा है। अब हमने फाइनेंस ही सिलेक्ट करा, तो नाउ इट इज जस्ट शोइंग मी फाइनेंस का डेटा, एडमिन, एचआर, मार्केटिंग, ऑपरेशंस। तो वैसे सिलेक्ट कर सकते हो। तो you can basically put in multiple filters without having to drag and drop each parameter. You just simply add slicers, and if you create any kind of charts or bar graphs out of this, it'll apply to those charts as well. जैसे हमने एक इसमें हमने सिंपल स्कैटर प्लॉट अगर करा, where is the scatter plot? Yeah. So now we have slices over here, जिसमें इस डेटा में अगर हम लोगों को चाहिए कि खाली रेटिंग 1 वालों का, सो नाउ खाली रेटिंग 1 में एडमिन, फाइनेंस एंड ऑपरेशन, बिकॉज प्रोबेबली एडमिन, फाइनेंस एंड ऑपरेशंस में ही रेटिंग 1 वाले लोग हैं, तो उसका यहाँ पे टैबुलर डेटा हमें दे रहा है। लेट्स से रेटिंग 1 और 3 का चाहिए, so now it changes the data accordingly over here. So we can do multiple things out of this. जैसा भी हमें चाहिए हम अगर उसे सिलेक्ट करते रहेंगे उस हिसाब से ही डेटा चेंज होता रहेगा। दिस इज बेसिकली द एडवांटेज ऑफ हैविंग अ स्लाइसर। एंड यहाँ पे भी अगर देखो तो फिल्टर्स क्रिएट हो गए अकॉर्डिंग टू द स्लाइसर्स, रेटिंग का, डिपार्टमेंट का। एंड बड़ा डेटा है तो हम लोग मल्टीपल और स्लाइसेस इंक्लूड कर सकते हैं, एंड वो सब इस टेबल, इस चार्ट के अंदर कंडेंस हो जाएगा, या फिर सेपरेटली भी इधर रहेगा। wherever you select, it applies to the entire pivot and the charts that you have created out of it. So you can play around with it however you like. This is basically what a pivot table does. Is this clear, guys? Vedant, how did you create this multiple items in B1 wala drop down? कौन से वाले में? अच्छा, इसमें। सो यहाँ पे पिवट जो हमने क्रिएट नहीं, करा है, ऊपर B1 में। हाँ, B1 में ये जो मैंने फिल्टर में रेटिंग का ऑप्शन डाला है, दैट इज व्हाई इट इज शोइंग ओवर हियर। अगर मैं इसको हटा दूं, रेटिंग को अनटिक कर दूं, तो हट गया वहां से, बट वी स्टिल हैव द स्लाइसर्स। तो स्लाइसर्स से भी वो फिल्टर हो जाता है। अगर हम इसमें रेटिंग डाल दें तब यहाँ पे आ गया ऑप्शन। नाउ वी कैन सिलेक्ट द रेटिंग्स ओवर हियर, एंड accordingly if you notice the slicer will also change, because it is basically a filter which you have visually present over here. You don't have to go to the pivot table, add the filters that you want. You can simply add slicers, and यहाँ से you can select whichever you want. Okay, thank you. Yeah. I think सर ने जितना भी कराया था वो सब कवर हो गया है. Just the loan amortization is left, which is there over here, but sir hasn't taught. It is simply straightforward. It is just 2 formulas that we've used. I'll delete those formulas from here. One second. ब्रो अगर सर ने नहीं कराया है तो नहीं आएगा ना एग्जाम में? I mean, हो किसी ने सकता है पूछा वो ही नहीं बोल है दे इसे। कि हम्म, I वो don't think so. हो सकता है बोल दे कि लोन कोई amortization check तो के ऐसा बाद. लगता है।
क्विज के टाइम पे तो कुछ भी पूछ रहा था वो। बेटर सेफ देन सॉरी। तो जैसे इसमें हमें डेटा दिया हुआ है फॉर लोन अमाउंट, पीरियड, नंबर ऑफ पेमेंट्स इन अ ईयर एंड द इंटरेस्ट रेट। हमें निकालना है कि इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना होगा अगर हम लोग इक्वल इंस्टॉलमेंट्स भर रहे हैं एवरी ईयर। तो हम लोग पीएमटी एक फॉर्मूला होता है, दिस कैलकुलेट्स द पेमेंट फॉर अ लोन based on constant payments and a constant interest rate. So PMT use करके it asks for what rate your loan is at. In this case, per annum rate दिया हुआ है, but the number of payments in a year is 4. तो ये rate we have to divide by the number of payments. We'll simply do per annum rate divided by number of payments. This is our rate per period, which is basically per quarter rate जो हमारा है वो हमने डाल दिया है इसमें। NPR is basically कि हमारा number of पेमेंट्स कितना है, कि हमारा पीरियड 5 years का है बट हमें पेमेंट्स 4 करने हैं इन 1 year, तो हमारा सिंपली हो जाएगा 5 into 4. These are the total number of payments that we have to do. Then we have to put in the loan amount, which is present value, PV, present value of the loan that we are considering, which is this. Now, this is FV, which is future value. Since we want to calculate the installment जिससे हमारा लोन रीपे हो जाए, तो ये फ्यूचर वैल्यू शुड बी 0, कि बेसिकली हम लोग ये इंस्टॉलमेंट निकाल रहे हैं जिससे हमारा एट द एंड ऑफ 20 पेमेंट्स, यानी कि एट द एंड ऑफ 5 years आवर फ्यूचर वैल्यू इज 0. देन टाइप, अब टाइप में तुम एंड ऑफ द ईयर में पे कर रहे हो या बिगनिंग ऑफ द ईयर में पे कर रहे हो वो तो स्पेसिफाई किया जाएगा अगर ऐसा क्वेश्चन आया। लेट्स से एंड ऑफ द ईयर में पे कर रहे हैं, हमने ये सिलेक्ट कर लिया। नाउ दिस गिव्स अस द इंस्टॉलमेंट अमाउंट पर पीरियड ऑफ पेमेंट। अब यहाँ पे एक हमने टेबल बनाया है कि हमारा इंस्टॉलमेंट नंबर क्या है, हर इंस्टॉलमेंट में कितना पे कर रहे हैं हम, और कितना हमारा प्रिंसिपल अमाउंट बैलेंस बच रहा है, एंड व्हाट इज द इंटरेस्ट अमाउंट। सो फॉर इंस्टॉलमेंट नंबर we've used a simple sequence formula which we learned earlier, which is sequence. Now how many number of rows do we want? We basically want 5 years into 4 payments each, यानी कि 20 payments. इसका we want a sequence. We filled it over here. Now payment. अब payment में also, since all the payments are the same, कि हम 64,907 पे कर रहे हैं for each installment, we still want 5 into 4 number of entries. So these are the number of rows we want. Column हमें एक ही चाहिए. Now we use the additional arguments which are start and step. तो start हम डाल देते 64907. तो ये क्या करेगा, फर्स्ट एंट्री में 64907 इनपुट कर देगा, एंड स्टेप अगर हम 0 डाल दे तो हर एंट्री में वो 64907 इनपुट कर देगा. So now this fills in the values. अब हमें निकालना है प्रिंसिपल पेमेंट अमाउंट. This is done by using another formula which is PPMT. अब PPMT में there are other arguments. जैसे हमें इंस्टॉलमेंट निकालने में रेट डालना था, वैसे ही 10.5 divided by 4. अब per is the number of installments that we are paying, because यहाँ पे हमने निकाल लिया है 20 installments के लिए हमारा पेमेंट क्या है. ऑल्दो हो सकता है कि हम प्रिंसिपल अमाउंट नहीं पे करें फॉर ऑल दोज 20 पेमेंट्स, हम खाली फर्स्ट 10 पेमेंट्स के लिए पे करें. सो यहाँ पे वी कैन सिलेक्ट इट अकॉर्डिंगली. बट लेट्स से हमें हर 20 लाइक ईच इंस्टॉलमेंट का चाहिए, सो हम बेसिकली इस सीक्वेंस को सिलेक्ट कर लेंगे कि वी वांट इट फॉर ऑल ऑफ द इंस्टॉलमेंट्स. नाउ
एन पर में जैसे हमने पहले ही डाला था like period into number of payments each period, then present value हमारा लोन का आ गया which is 10 lakhs. अब हमें फ्यूचर वैल्यू और टाइप नहीं डालना है क्योंकि हमने ऑलरेडी वो कैलकुलेट कर लिया है थ्रू द इंस्टॉलमेंट अमाउंट. तो वी ऑलरेडी टेकन दैट इनटू कंसिडरेशन. वी डोंट नीड टू पुट इन those arguments. We can close the bracket and we'll get the principal amounts for each installment. And interest is simply payment minus the principal amount. So this is basically the loan amortization schedule. अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आया कि डेटा दिया हुआ है कि तुम्हारा लोन इतना है और इतने पेमेंट से इंटरेस्ट रेट इतना है, कितने साल में तुम्हारा रीपे होगा, या फिर कितना इंस्टॉलमेंट तुम्हें चाहिए रीपे करने के लिए, एंड उसका एक शेड्यूल बना के दो, देन ये फॉर्मूलाज यूज आते हैं, पीएमटी एंड पीपीएमटी. Any questions, guys? Was this the entire syllabus? Yes, we're done with the syllabus. Okay, cool. Any other questions? I think we can wrap it up if everybody's clear. क्योंकि इसमें और कुछ है नहीं, हमें बहुत ज्यादा तो कुछ सिखाया नहीं है. यही सारे फॉर्मूला सिखाए हैं उसने. लोन अमोर्टाइजेशन भी सिखाया तो नहीं, बट आई थिंक दिस कैन कम, सो आई थॉट आई शुड कवर इट क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चन में दिया हुआ था. सो बस. Thanks, Vedant. Okay, guys, thank you. Thanks, man. Really appreciate this. Thanks, bro. Yeah. Thank you, bro.